Okay. Good morning, all of you. Good morning. So, आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट ग्रेविटेशन. ठीक है, some B.Ed entrance ପାଇଁ. So again we will discuss concepts and questions मिसेकी. ठीक है. So जहाँ जहाँ questions आसीबो ता रिलेट से तार concept से question concept plus related concepts भी जोटा important for examination ताको हम डिस्कस करिवा. ठीक है. So जो माने भी वीडियो देखुचंती it will be very helpful. Okay, to understand the chapter or chapter revision भी हो okay, and important concepts रा सब revision भी हो and questions भी जहाँ में discuss करिवा definitely you can expect. ठीक है, गोटे के दीटा question या भीतर निश्चित भाव रे B.Ed entrance रे आसीबो. Okay, understood. So गोटे तो नहीं, more than I think you will get 2 to 3 questions आज हम जहाँ discuss करे पे जाऊँ. Okay, so देखो तो first question होचे हमारा the force of gravitation between two body depends on mass of the two bodies, distance between them, gravitational constant, all of the above. Answer is what? All of the above. So how it is all of the above केमती आम डिस्कस करिवा. देखो ग्रेविटेशन सब इम्पोर्टेंट लॉ होची न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. ओके, न्यूटन्स लॉ ऑफ gravitation. So Newton's law of gravitation हिसाब रे what does Newton's law of gravitation states? देखो if I am taking two masses, okay, two masses m1 and m2 and this is a line joining the center of the masses. Okay, this is a line joining the center of the masses. बा एमिति धरंतु ये गोटे बॉडी हला आ गोटे बॉडी एमिति अछि ताहले मु कोन डिस्टेंस एमिति नेबी कि ना ये भूल हिजिवो. ठीक अछि, then which distance I have to consider? I have to consider the distance between the center of the two bodies. So ये हला गोटे center, this is another center, so this distance I have to take. ठीक अछि, always we have to consider the distance of the centers between the two bodies and this distance if it is small r, then as per Newton's law of gravitation the gravitational force of attraction, the gravitational force mane rakhantu it is the weakest force in the universe. Okay, so gravitational force ठीक है, weakest force okay, in the universe. ठीक है, and it is what? Always attractive. It is always attractive force. It is never repulsive. ठीक है, magnetic force, electrostatic forces, so like charges will repel each other, unlike charges will attract each other. Similarly your magnetic field, so like poles will always repel each other, unlike poles will attract each other. ठीक है, किंतु here you see that gravitational force is always attractive in nature. So m2 को m1 attract करछि, m2 m1 को attract करछि. Okay, so the force of gravitation between these two bodies is directly proportional to the product of the masses, inversely proportional to the square of the distance between them. ठीक है, so this is given by whom? Given by Newton. ठीक है, so सेटना वाला कौन? Newton's law of gravitation. जब मैं वो इक्वेशन लिखी I have to use a universal gravitational constant, but I have to use a proportional constant that is called G. So capital G, small m1 into m2 by r square लिख परिबी. Now what is G? This is called universal, okay, gravitational constant. Universal gravitational constant. ठीक है, okay, and value of capital G is 6.67 10 to the power minus 11 Newton meter square per kg square. Newton meter square per kg square. ठीक है, this is called universal gravitational constant. तो ये देखो समझते जे gravitational force कहाँ पर डिपेंड कला? गोटे product of the masses, गोटे G, गोटे r square ऊपर. तो जति के अधिका distance बढ़िबो फोर्स तार स्क्वायर टाइम्स कमिबो. ठीक है, जदि धरंतु आई एम सेइंग ये दीटा बॉडी रहिला एट. ओके, ये दी जनकर डिस्टेंस इज से 2r. तो जदि आंकर डिस्टेंस मु बर्तमान 2 टाइम्स बढ़े देबी ताले केते हबो? 4r हला. फोर्स केते टाइम कमी जिवो? स्क्वायर टाइम्स. काहे कि FUC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, ताले F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 4r रो स्क्वायर. सो जदि 4r रो स्क्वायर हला दिस विल बी इक्वल हाउ मच? 1 by say it is, if I am writing एमती नियंतु easy होगा. So दीटा बॉडी this distance r हेगला 4r, so this is 16r square. तो खाली आगुर r थिला तो r square एबे केते हला फोर्स
16 r square तो जदि देखो डिस्टेंस 1/16 टाइम्स ऑफ r square सो दैट मीन जदि r 4 टाइम्स हो गला फोर्स केते टाइम कमी गला 16 टाइम्स कमी गला ओके सेतने बोली 1/16 आछे बिकॉज दे आर इनवर्सली proportional to each other so ए भले भी गोटे क्वेश्चन पचारि पारे दैट इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज इज से इंक्रीज्ड बाय 2r ठीक अच्छे इंक्रीज्ड बाय 2 टाइम्स सो इनिशियली जदि r नाउ इट इज 2r ताले 1/r स्क्वायर कले केते हबो 1/4 into r स्क्वायर सो फोर्स केते ही जिवो 1/4 टाइम्स कमी जिवो ओके अंडरस्टूड सो अनदर मास जरा प्रोडक्ट जते अधिका हबो बॉडीज रो मास जते अधिका हबो तांका भीतर ग्रेविटेशनल फोर्स एते अधिक एक्ट करिवो एंड आल्सो डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ g बट मन रखंतु वैल्यू ऑफ g इज व्हाट यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट सो दिस विल ऑलवेज रिमेन व्हाट कांस्टेंट 6.67 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर ठीक है ओके yes so next देखो द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज मैक्सिमम एट इक्वेटर पोल्स सेंटर ऑफ अर्थ ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इट इज ऑलवेज मैक्सिमम एट द पोल्स ठीक अच्छे ये टिके टाइम नबे कॉन्सेप्ट या टिके डिटेल डिस्कस करवा ओके सो देखो दिस इज अर्थ ठीक अच्छे ये अर्थ रा सरफेस ठीक अच्छे अर्थ रा सरफेस ना स्मॉल g इज कैपिटल gm बाय धरंतु ये रेडियस ऑफ द अर्थ कैपिटल gm बाय r square ठीक है कैपिटल gm बाय r square सो स्मॉल g कैन बी रिटन एज जदि धरंतु मु गोटे ऑब्जेक्ट रो हाइट बढ़े देली धरंतु एमती मु हाइट इंक्रीज कर देली ताले केते हला h तो इट इज स्मॉल g इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r square तो जदि r बढ़िबो g वैल्यू कमिबो तो इठी केते हबो gm बाय r प्लस h रो होल स्क्वायर सो दिस इंप्लाइज स्मॉल g इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r प्लस h रो होल स्क्वायर तो जदि ये कौन है डिनोमिनेटर बढ़ीगला तो g वैल्यू डिक्रीज हम तो से जमी हाइट बढ़ आम सरफेस आर्थ सरफेस उपरक जावा g रो वैल्यू डिक्रीज हम ठीक अच्छे सिमिलरली जदि मु डेप्थ बढ़ाऊे दिस इज सरफेस मुझे धरतु d डेप्थ को पलै आसली तलू को ओके देन दिस डिस्टेंस इज रेडियस ऑफ अर्थ पूरा r इठी आसो के r माइनस d तो ये एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट धरतु d डेप्थ आसीगली सो एट दिस पॉइंट ठीक अच्छे यही पॉइंट रे g वैल्यू केते रहिबो तो एट दिस पॉइंट g वैल्यू इज ओके सो दिस इज g इंटू धरतु ये g डैश रोचे तो g इंटू 1 माइनस d बाय r ओके यार डेरिवेशन भी अच्छे आई एम नॉट गोइंग टू द डेरिवेशन ओके सो जदि डेरिवेशन कले भी एक जिनस आसो सरफेस उपर कौन gm बाय r स्क्वायर ठीक अच्छे दिस इज ऑन सरफेस gm बाय देखो r स्क्वायर तो g ऑन सरफेस इज g बाय r स्क्वायर m होची कौन मास इज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम तो जदि मु अर्थ को गोटे स्पीयर कंसीडर करुच्ची कौन लिख पारि 4/3 पाई r क्यूब तो एट डेप्थ d gd मु लिखिली g बाई ये कौन हम r माइनस d रो होल स्क्वायर कहीं d डेप्थ रेडियस केते रहला r माइनस d सो इट इज g बाई r माइनस d रो स्क्वायर इंटू रो इंटू 4/3 पाई इंटू r माइनस d रो क्यूब ठीक अच्छे सो ये देखो r स्क्वायर कटिगला गोटे r ये कटिगला ये कैंसल है r माइनस d रहा सो बर्तमान देखूँ मु gd बाहर करने चाहूँ gd बाई gs दुटार रेसीो ने कौन लिखी g इंटू रो इंटू 4 पाई बाई 3 इंटू r माइनस d डिवाइडेड बाई g इंटू रो इंटू 4/3 पाई इंटू r तो g विल गेट कैंसल रो विल गेट कैंसल 4 कटिगला ताले ये देखो gd कैन बी रिटन एज gs इंटू r minus d by r so this is gd is gs into 1 minus d by r तो ठीक है फाइनली फॉर्मूला हम पाइगले जहाँ आम ये लिखी अंडरस्टूड तो से बोली ना यू सी इफ आई एम इंक्रीजिंग द डेप्थ ऑल्सो जदि मु अर्थ रे ठीक है अर्थ धरत ये डेप्थ जब बढ़े बढ़े जाऊँचे ताले जब d वैल्यू बढ़ो देन दिस d by r फ्रैक्शन वैल्यू इज ऑल्सो गोइंग टू increase yes or no d by r fraction value will increase so if this fraction value will increase that means gd value will decrease तो से बोले सरफेस रू ऊपर को जावा सरफेस रू जब तलू को आसवा ठीक अच्छे तो सरफेस रू जब आम ऊपर को गले बा सरफेस रू तलू को आसिले g value will always decrease so that is why g is max always on what surface ठीक है g is max always on surface किंतु सरफेस रे भी सेम रहेनी
इक्वेटर रे सबुठ मिनिमम एंड पोल्स रे सबुठ मैक्सिमम सो जतबे हम इक्वेटर पोल आड़ को जानती योर जी वैल्यू विल बी व्हाट जी वैल्यू विल बी इंक्रीजिंग जदि पोल इक्वेटर को आस जी वैल्यू विल रिड्यूस ठीक अच्छे केमिति लेट अस सी एठी सो अर्थ रा एक्चुअल शेप होची कोन अर्थ रा शेप होची कोन इट इज जियोइडल बा जियोइड शेप मीन्स स्लाइटली इट इज फ्लैटेंड एट poles so earth is like this ये बढ़िया ठीक अच्छे so center है ये this is r1 and this distance is r2 so this is your north pole this is south pole this is equator now clearly what r2 is less than r1 so g is capital gm by r square so जदि मु g2 बाहर करी so this is what g is inversely proportional to r square so r जदि अधिका g कम बा r जदि कम g अधिका जेहेतु r2 एठी कम अच्छी से g2 विल बी ग्रेटर देन व्हाट g1 एंड g2 इज एट पोल्स तो से बोली इक्वेटर कम पोल्स रे मैक्सिमम ठीक अच्छे अंडरस्टूड सो मैक्सिमम वेयर एट पोल्स आ गोटे मन रखु सेंटर ऑफ द अर्थ रा कांसेप्ट सेंटर ऑफ द अर्थ रे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वैल्यू केते रहइबो 0 ठीक अच्छे कहीं देखो दिस इज अर्थ ये हला पोल तो आम सेंटर आड़ को आसुँच तो सेंटर रे डिस्टेंस हम केते आम डी डेप्थ तौर को धरत आसिले पोल रु डी डेप्थ आसिली पूरा सेंटर जाए ताहले एठी डी रे वैल्यू केते हिजिबो आर हिजिबो ताहले जी एट सेंटर इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस डी बाय आर जो लिखुचे तो दिस इज जी इंटू 1 माइनस आर बाय आर कटी के 1 आसीगला सो जी सी रे वैल्यू केते हिजिबो सेंटर जी इंटू 0 सो जी सी इज इक्वल टू 0 तो सेतमे बोली सेंटर रे जी रो वैल्यू केते रहइबो 0 ओके सेंटर रे जी रो वैल्यू विल बी 0 ठीक अच्छे so this is very important so next question देखंतु so SI unit of gravitational constant G वेरी गुड एथर में दुईटा जिन देखिए गोटे एसआई यूनिट ये कन्फर्म क्वेश्चन गोटे एग्जाम रे आसे जहाँ जहाँ आज डिस्कस कर आज मुझे किसी मैंने कहीपर ये इंपोर्टाट नुहे कि इंपोर्टाट नुहे आज सब इंपोर्टाट आम डिस्कस करने जाऊँ ठीक है बहुत कॉन्सेप्ट्स आम आज ग्रेविटेशनल चैप्टर डिस्कस करदे सब जगह तो पॉसिबल नुहे ठीक अच्छे बट वी विल डिस्कस 90% ऑफ द कॉन्सेप्ट्स ठीक अच्छे 90% चैप्टर इंपोर्टाट कॉन्सेप्ट्स आम डिस्कस करवा रेस्ट 10-20% ठीक अच्छे you can study okay नहले आमर you can join our regular classroom ठीक अच्छे कहना टाइम ही नहीं just 1 hour भितर I have to cover okay so देखो SI unit of gravitational constant so ये देखो F can be written as capital G m1 m2 by r square तो तक मु कोठु लिखुछि so this I am writing it from Newton's law of gravitation so it universal gravitational G को कौन लिखि हबो F into r square by m1 into m2 so force SI unit of कौन न्यूटन so Newton is kg meter per second square because force is mass into acceleration mass is kg acceleration is meter per second square kg meter per second square this is meter square तले रही गला kg square कटि गला this is kg so एठी कौन लिखा जिवो this can be written as देखंतु मीटर क्यूब पर सेकंड स्क्वायर नहले जदि आको न्यूटन रखिबी ताहले केमति लिखि हबो दिस इज न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर तले रहिला केजी स्क्वायर सेते इट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर ओके केजी स्क्वायर ठीक अच्छे आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड वन क्वेश्चन लाइक दिस yes यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ठीक अच्छे तो ये जी वैल्यू इज 6.67 okay 6.67 10 to the power minus 11 which Newton meter square per kg square ठीक है understood so same thing ठीक है so Newton meter square per kg square आ गोटे important question B.Ed पचारे that is your dimensional formula ठीक अच्छे
of universal gravitational constant रो डायमेंशनल फॉर्मूला पचारे सो केमती बाहर करवा देखो F इज इक्वल टू G इंटू m1 m2 बाई r स्क्वायर ठीक है तो ऐसा यूनिट में बाहर करदे सो G इज F इंटू r स्क्वायर बाई m1 इंटू m2 सो G कैन बी रिटन एज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर ये तो ऐसा यूनिट हो गला सो न्यूटन हूँ कौन kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर रहा तले रहा kg स्क्वायर तो ये कटिगला गोटे kg तो ये ऊपर पड़े के कौन हम सो m टू द पावर -1 मास ये आसीगला मीटर क्यूब l क्यूब सेकंड ऊपर पड़ला t टू द पावर -2 विदिन स्क्वायर ब्रैकेट मन रखते स्क्वायर ब्रैकेट जब देवेनि आंसर भूल जदि कर्ली ब्रेस देदेवे ये भाया ताहले भी इट इज इनकरेक्ट पैरेंथेसिस आल्सो इनकरेक्ट इट मस्ट बी विदिन द स्क्वायर ब्रैकेट बुझिपारे विदिन द ब्रैकेट्स सो दिस इज द यूनिट ओके सो जूल्स पर केजी हूँ कहार ऐसा यूनिट दिस इज ये हूँ लेटेंट हीट रो ओके लेटेंट हीट रो ठीक अच्छे ये हूँ कहार देखो फोर्स इज मास इंटू एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन इज फोर्स बाय मास ठीक है सो दिस इज न्यूटन पर केजी सो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट मीटर पर सेकंड स्क्वायर ठीक अच्छे ये तो होगा एक्सेलरेशन ये भी एक्सेलरेशन दिस वी हैव डिस्कस्ड सो सब जगह ऐसा यूनिट आम डिस्कस कले जे ऑप्शन में बाकी जो ऐसा यूनिट दिखाई को फिजिकल क्वांटिटी को ऐसा यूनिट ओके ठीक अच्छे सो नेक्स्ट देखो द वैल्यू ऑन द मून इज अप्रोक्सीमेटली ठीक है द वैल्यू ऑफ जी ठीक है टाइपिंग ठीक है द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी ऑन मून इज अप्रोक्सीमेटली ठीक अच्छे देखो मून रो मास इज लेस ठीक अच्छे मून रो मास इज लेस सो केतिक लेस 1/6 द मास ऑफ अर्थ ओके ठीक अच्छे मास ऑफ मून इज इक्वल टू 1/6 मास ऑफ अर्थ ठीक अच्छे तो जब मुझे एपटे जी मल्टीप्लाई कर देली मीन्स मास ऑफ मून और जी ऑन अर्थ अबा एनी दिस इज अ बॉडी ओके तार दी गोटे बॉडी यार मास m ताले अर्थ रे यार वेट केते हबो m इंटू जी एंड यार मून रे वेट केते हबो m इंटू ठीक अच्छे बा यार m इंटू जी बाई 6 हो ठीक अच्छे बिकॉज मून रो मास जदि 1/6 ऑफ द अर्थ देन जी रो वैल्यू भी केते आसीबो g बाई 6 आसीबो मून दिस इज अर्थ बाई 6 आसीबो ओके सो दैट इज व्हाई द वैल्यू ऑफ स्मॉल g ऑन अर्थ इज ऑन मून इज 1/6 ऑफ दैट ऑफ अर्थ ट्वाइस दैट ऑफ अर्थ हेनी या अर्थ कौन मास ऑफ मून इज ग्रेटर देन मास ऑफ अर्थ दैट इज नॉट पॉसिबल ठीक अच्छे इम्पॉसिबल सेम एज अर्थ इम्पॉसिबल ठीक अच्छे मून रो मास इज लेस देन दैट ऑफ अर्थ 1/3 ऑफ अर्थ नुहे इट इज 1/6 ऑफ द अर्थ से बोली इफ आई एम राइटिंग वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून is equal to 1/6 weight of the object on earth 1/6 weight of the object on earth okay so next देखो weight of a body is what is weight of a body weight of a body is actually what it is the force ठीक अच्छे force केमिति देखंतु weight होची nothing but gravitational force ये हला earth center this is earth this is the body ठीक अच्छे now earth या ऊपर force लगोचे gravitational force so F is equal to mass of earth mass of body divided by यहाँ भितर डिस्टेंस धरतु ये जो हाइट इज वेरी नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू रेडियस कहीं रेडियस ऑफ अर्थ होचे केते 6400 किलोमीटर ठीक अच्छे सो दैट इज वाई डिवाइडेड बाय मु कौन लिखिले एठी आर स्क्वायर ओके सो जो फोर्स रे अट्रैक्ट कर दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज m इंटू जी सो मास ऑफ बॉडी इंटू जी ओके तो से स्मॉल g कैन बी रिटन एज हियर ओके कैपिटल M E इंटू मास ऑफ बॉडी इटी मास ऑफ बॉडी रहा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर ठीक अच्छे ओके सो दिस इज द वेट ऑफ द बॉडी एंड विच इज इक्वल टू दिस सो ये हूँ कौन ग्रेविटेशनल फोर्स ओके
So that is why it is nothing but what force. Mass hochi kona amount of matter, okay, amount of matter ठीक है in a body, and density is what, heaviness, okay, of an object. Mass per unit volume तारा formula समस्त भावते mass per unit volume answer, but that is the formula mathematical how to find out the density. But what is the density? That is nothing but mass per unit volume, but it defines what, heaviness of a body. Heaviness of a body mathematically rho can be written as mass per unit volume, and volume hochi kona, this is the space or region occupied by a body or by a body, ठीक है, region or space occupied by a body, ठीक है. So next देखो, universal law of gravitation was given by, we have discussed just now, that is Newton, ठीक है. Einstein gave theory of what, relativity, ठीक है, okay. So theory of relativity, okay. Kepler, Newton got the gravitation, ठीक है. Then laws of motion, Kepler, okay, about planetary motion, Kepler laws of, okay, planetary motion, okay. Galileo gave the geocentric theory. The geocentric theory होची कौन, that Earth is at the center of the solar system, ठीक है, sun and other planets are revolving around it in a circular orbit, ठीक है, not in an elliptical, circular orbit. Elliptical किए कहले Kepler, okay, ठीक है. Then Newton's law of gravitation is also called as universal law of gravitation. Yes, next देखो, the weight of a body at the center of the earth, ठीक है. Already we have seen the center of the earth ray, what is the value of g. So g at center is equal to g into 1 minus d by r. The d value तो is equal to r ना नहीं, at center, ठीक है. So that means gc is equal to g into 1 minus r by r ही गले और ठीक 1. So gc will be equal to how much, 0, okay. तो से बोले g जदि 0 ताले वेट कौन लिखा जीव, वेट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, जो फोर्स रे गोटे ऑब्जेक्ट को अर्थ निज आड़ को अट्रैक्ट करे, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, वेट ऑफ द अर्थ. सो दिस इज इक्वल टू m into gc. सो दिस इज m into 0. सो w इज इक्वल टू 0, ओके, क्लियर, ठीक है. नेक्स्ट नहीं देखो, 0 होची सेंटर ऑफ द अर्थ रे, मैक्सिमम कोठी होबो, ऑलवेज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. मिनिमम कोठी होबो, से मिनिमम एट इक्वेटर, ठीक है, और इक्वेटर, ठीक है. देन मैक्सिमम गोटे सरफेस नहले कोठी होबो, पोल्स रे कहि परियो जदि हम हाइट और डेप्थ, हाइट एंड डेप्थ कंपेयर करले ये, एंड दिस इज इक्वेटर एंड पोल्स कंपेयर करले. मिनिमम इक्वेटर कोठी, दिस इज पोल्स एंड इक्वेटर भितर है, ठीक है. नहले विथ इंक्रीज इन हाइट और इंक्रीज इन डेप्थ, ठीक है. सो दुईटा केस रे, एंड देन सेम एज सरफेस ना, वेट ऑफ द बॉडी इज नॉट सेम एज सरफेस बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ जी. मैक्सिमम कोठी हम सेम एज सरफेस नहीं, मैक्सिमम इज ऑन द सरफेस, ठीक है. मैक्सिमम एट सरफेस, ओके. आई होप दिस इज क्लियर. Next देखो, the force of gravity on a body is also called, force of gravity on a body is also called as weight. Just now we have discussed it is called as weight, ठीक है, because I can write F is equal to m into g, which is equal to capital G m small m by r square, ठीक है. So that is why a weight is equal to gravitational force, okay. इठु ही तो बाहर लेना, m कटि गले, स्मॉल g is capital G m by r square, इठु ही आछे, ओके. मास वी हैव डिस्कस्ड. थ्रस्ट देखो, थ्रस्ट होची कोन, ए परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग ऑन द सरफेस, ठीक है, इज कॉल्ड थ्रस्ट, ठीक है. सो थ्रस्ट इज ए परपेंडिकुलर फोर्स. प्रेशर होची कोन,
pressure is not force per unit area, that is incorrect. It is normal force on unit area. तो जदि देखो ये गोटे एरिया है एठी गोटे फोर्स जदि एमती लगे यार एरिया जदि एम कौन प्रेशर जो गोटे फोर्स पर यूनिट एरिया लिखिपारि आई कैन नॉट राइट ठीक अच्छे यार दुईटा कंपोनेंट आसो गोटे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गोटे वर्टिकल कंपोनेंट सो ये प्रेशर कौन हम नॉर्मल फोर्स कोटा नॉर्मल मीन्स 90 डिग्री ठीक अच्छे एरिया संगे 90 डिग्री किए अच्छे एफ भी सो दिस इज एफ भी बाई ए इज प्रेशर तो ये आसो न्यूटन ये आसीगला मीटर स्क्वायर सो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या इवन इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट पास्कल ठीक है ऑल्सो कॉल्ड एज पास्कल ठीक है ओके व्हाट इज द एसआई और atmospheric pressure is how much 1 bar is atmospheric pressure which is equal to 1.013 10 to the power 5 pascals atmospheric pressure कौन मेजर करा जाए बैरोमीटर ओके atmospheric pressure is measured in barometer प्रेशर तीन प्रकार गोटे atmospheric pressure आम कहल डिस्कस कले ठीक है atmospheric pressure छड़ा प्रेशर तीन प्रकार कौन गोटे vacuum pressure any pressure below atmospheric pressure is called vacuum pressure means atmospheric pressure is 1 bar if I am taking 0.5 or 0.8 bar or 0.7 bar all these are what less than 1 bar so that is why these pressures are called as vacuum pressure and any pressure above atmospheric pressure means more than 1 bar 1.2 bar 1.5 bar 2 bar 4 bar all these pressures are called as what gauge pressure and if I add your gauge pressure plus atmospheric pressure that is equal to absolute pressure okay so this is your atmospheric pressure 1 bar below this if I come then this is vacuum pressure which is a 0.8 bar या ऊपर गली so it is 2 bar so this is called as gauge pressure ठीक है so absolute pressure is P gauge plus P vacuum ठीक है understood next देखो the gravitational force between two masses decreases when okay already मैं देखो बहुत क्वेश्चन केमिति एग्जाम रे पचारा जायतिला प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ये गुडा को बीएड एंट्रेंस रो मैं इंक्लूड करछा भितरे भी ठीक अछि तो ये गोटे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी ऐड करछि मु as well as previous year questions also so gravitational force between two masses decreases so observe जहाँ भी अच्छे इठी whatever we are having ठीक अछि so all these things ये होछ हमारा mostly from universal law of gravitation okay so universal law of gravitation रही questions so gravitational force is capital G m1 m2 by r square so these are two bodies this is the center so this is r okay so center so yes वाला r so m1 m2 this is r ठीक है so the gravitational force between two masses decreases केतल decrease होगा when distance will increase yes or no f is inversely proportional to r square so r बढ़ी गला force कमी जीवो केते times कमी जीवो square times कमी जीवो जदि distance 2 times बढ़ी गला force केते time कमी जीवो 4 times force will reduce जदि distance 4 times बढ़ी गला force केते times कमी जीवो square times 16 times the force is going to reduce okay understood ठीक अछि so mass increases jodi what will happen to gravitational force increases distance r increases f decreases distance r decreases f increases ठीक है so that is why gravitational force between two masses decreases when distance between them increases okay answer is option B okay so next question mass of a body ठीक है mass of a body कौन होगा mass of a body changes with place remains constant 0 in space increases on moon देखो तो mass is the amount of matter content in a body okay so mass never changes mass is always constant ठीक है mass never changes mass is always constant okay so it always remains constant changes with place no it can't change हम small g will change with place 0 in space इठी 0 कौन हम small g is 0 in space because इठी 0 value बा कौन सी gravitational force exist करूनी increases on moon ना okay जदि if I am taking a body mass the remain constant weight will decrease weight will become what 1/6 the weight on earth ठीक है 1/6 the weight of earth so if your weight on earth is say 60 kg
then on moon it will be how much, just sorry, if your weight on earth is say 60 Newton, okay, weight is a force, we cannot write in kg, we have to always write in terms of Newton. तो तमे जहाँ measure करछो इठी, that is nothing but mass, you multiply 9.8 to it, you will get the weight. So for example, if your weight on earth is 60 Newton, weight of a body on earth is 60 Newton, moon re kete hijibo 1/6 of 60, that will be equal to how much, 10 Newton, okay, that will be equal to 10 Newton. So I hope it is clear. So next dekhantu, gravitational force is always, we have discussed that gravitational force is always what, attractive in nature. Second thing kona, gravitational force is a conservative force, okay, it is a conservative force. So conservative force hochi kona, that the work done by this force does not depend on the path followed, okay, so that is called as your conservative force, okay. So conservative force means work done by the force does not depend on the path followed, okay, does not depend on the path followed. Clear? बुझ पहले समझते, understood? So next, देखो repulsive attractive concept आसिला. Repulsive attractive means either magnetic force नाले electric force. Attractive always जदि, ठीक है, attractive always जदि, then it is gravitational force, ठीक है. Then zero तो किछ नहीं, okay, electric force, this can be attractive or this can be repulsive. Next, the value of G decreases if, okay, the value of G, okay, decreases if height increases, depth increases at equator, all of this, ठीक है. Already we have discussed that जदि height बढ़ी गला G होची कौन, capital GM by R plus H रो whole square. So this is increasing, definitely G value will decrease, and जदि depth increase है गला, with increase in depth, so D decreases as height increases, correct. So depth देखिए, so G at D will be equal to G into 1 minus D by R. So जदि D value equal to R R कटी गले, GT will be equal to what, 0. So then depth increases, correct. At equator, ठीक है, at equator it is less, okay, because radius is more, so G at equator is less than G at poles, correct. So all the above will be the answer, okay, all the above is the answer. Okay. So next देखो, ठीक है. So weightlessness is experienced in, weightlessness कोडी feel हुए, weightlessness सेतबेले feel हबो when the body is under free fall. Free fall भी हम डिस्कस करथिले आगरो, मजे आउ थे डिस्कस करछि ग्रेविटेशन टॉपिक फ्री फॉल, ओके. सो फ्री फॉल होछि कोना, when only gravitational force, only gravitational force acts on a body and no other force acts on it, no other force acts on it, then we say what, the body is under free fall, okay, then the body is under free fall. देखो it experience weightlessness, ठीक है, lift going down, lift going up on earth surface ना space, obviously on space, ठीक है, and free fall, space and free fall. देखो तो जदि lift जाउची, माने तो lift जाउची बा lift अच्छी, जदि lift रो rope छिंडी गला, okay, like this is a lift, ठीक है, lift रो rope छिंडी गला, कौन अब तलुक आसीबो, okay, so this will be the direction of acceleration of the lift. धरंतु इठ गोटे पर्सन बा जने ठिया आइछ, ता वेट तलुक एक्ट करछि, ऊपर कोन एक्ट करछि, नॉर्मल रिएक्शन, बट नेट फोर्स इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन,
So mg minus r is net force, is mass into acceleration. So net force is equal to mass into acceleration as per Newton's second law. Okay. So this is equal to m into g. That acceleration will be equal to what? Small g. It is under what? Free fall. So free fall only gravitational force acts on a body and no other forces are acting on it. So that is the value of small g is what? Or what is the force acting on it? Only the gravitational force. So this is mg minus r is equal to m into a jagar kon hella g, because a will be g, it is under free fall. So now you see this will get cancelled. So r value will be equal to what? 0. Understood? So that is why free fall will be, the body will experience what? Wetlessness. Okay. Now the body is going to experience wetlessness. Okay. Space and free fall theta. Lift going downward. So lift jeta downward jauchi, your apparent weight reduces, means you will feel as if your weight has reduced. Kemti? Okay. So this is the body. Okay. So person is standing here, lift talu jauchi, acceleration downward. So this is mg upuruku r. It free fall nahi, taluku jauchi. So mg minus r is m into a. Sorry, the r is equal to okay mg in plus ma. So that means r, sorry, just a second. So yes, r can be written as mg minus ma. So r is m commonly, this is g minus a. Actual weight body ro kete mg, eti kete mila g minus a. That means that lift talugu jauchi, the person will feel as if his weight has reduced. So that is why apparent weight, apparent means it appears but it is not. Actually, illusion, apparent, appears. It appears that the weight of the person has reduced. Okay, weight of the person has reduced. So that is why we write down what? M into g minus a. Okay, the lift upuru jauchi kon hochi dekhantu, this is person is standing here, acceleration hela upuruku taluku act korchi mg, normal reaction upuruku. So kon likhibu r minus mg, net force is an upward. So this is m into a. So r is equal to m common hela, this is g plus a. So actual weight hela kona g, kintu upuru gala kon hochi g plus a, setame kon hochi the apparent weight okay increases. Apparent weight increases when the lift goes in upward direction on the surface of the earth. On earth's surface what will happen? The person is going to experience his true weight. So on surface your apparent weight, whatever you feel, is actually your true weight. Okay, apparent weight. So if earth's mass becomes double the value of g, earth mass double is. So small g is capital G me by r square, earth mass double. So g value kon likhiyo, g into 2 times the mass of earth by r square. So g is equal to 2 bahar ku asle g me by r square. Now you compare with this, this can be written as either g dash bani. So g dash will be equal to 2 times of g. Your g will also become what? Double. If the earth's mass becomes double, the value of g will also become double. Okay, 4 times by ye no hai. So next dekhantu, that free fall means we have discussed already. Free fall means the body is under the influence of what? Gravity. Okay, free fall means the body is under the influence of gravity, the falling under gravity only. Free fall means, what a second, under the influence of gravity. Rajesh kamo konni. Yes, means it is under the influence of gravity. Okay, means only gravitational force
is acting on it and no other force is acting. ठीक है. So free fall, falling with air resistance किसी नहीं, constant velocity no, but it will fall under constant acceleration, that is g. So it will fall under gravity, falling with increasing force no. ठीक है. ओके. सो यार सेमती किसी रेलिवेंट कॉन्सेप्ट नहीं जे बाकी तीन ऑप्शन रो माने किसी बुझे हबो. ओके. सो दिस देखंतु नेक्स्ट होची कोना, द एस्केप वेलोसिटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली. एस्केप वेलोसिटी कोना देखंतु, एस्केप वेलोसिटी मीन्स escape velocity, so it is the minimum velocity at which an object is projected from the surface of a planet such that it does not come back. ठीक है, does not come back means धरंतु ए ऑब्जेक्ट को मु मिनिमम केते की मिनिमम मैक्सिमम तो किछि भी पारे, मिनिमम केते की वेलोसिटी थ्रो करले इट विल एस्केप फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ. ठीक है, इट इज नॉट गोइंग टू रिटर्न बैक टू द अर्थ्स surface, that is called as escape velocity, and for earth it is 11.2 kilometer per second. That means any object I take, ठीक है, irrespective of its mass, okay, छोटो माने कम था माने हल्का ऑब्जेक्ट था, ओजन था, जहाँ भी था, irrespective of its mass, if it is thrown at a speed of 11.2 km per second, it will definitely escape from the earth's gravitational pull. Okay, ठीक है. So that is why we write down here that escape velocity. Okay, so escape velocity, so this is half mv square, okay, is equal to, ठीक है, mg, okay, or into r here. So m and m will get cancelled, so v can written as 2 into gr root over. Okay, ठीक है. So 2 times of, you substitute g and radius, then you will get escape velocity of the earth as 11.2 km per second. ठीक है. Then Kepler's laws of motion are related to motion of planets. ठीक है. Okay, now there are 3 different laws of Kepler's laws of motion. First is called as law of orbit. Okay, law of orbit. What does this law states? That all planets revolve around sun in an elliptical orbit. This is ellipse, ठीक है, and major axis, minor axis, semi major, semi minor, semi major axis, semi minor axis. So theta focus रहे f1 and f2. ठीक है. So as per law of orbit by Kepler, it states that all planets revolve around the sun in an elliptical orbit with sun situated at one of its foci. f1 नले f2 रे रहइबो. And second law होची कोन, law of areas. Law of areas कौन कहे देखंतु. Now this is f1, this is f2. गोटे प्लानेट ये अच्छे मोटे लाइन जॉइन कली, धरतु 2 आवर्स रे प्लानेट ए पॉइंट को आसीगला, मैं लाइन जॉइन कली तो ए एरिया, ए लाइन किसी एरिया ये स्वीप कला, दैट इज a1 2 आवर्स. तो सेम टाइम पीरियड पुणे आउ 2 आवर्स रे कौन है ए प्लानेट ये जाए आसला, ये किसी एरिया स्वीप कला, ये जो लाइन, ठीक है. सो दिस इज a2. So as per Kepler's laws of areas, a1 is equal to a2, that the area swept by a radius vector joining the center of the sun to the center of the planet, ठीक है, covers equal areas in equal interval of time. So time interval must be same. Okay, and third is called as law of time period. Okay, law of time period. So law of time period कौन कहे, that if this is a planet revolving around the sun, this is the distance between them is r, the square of time period of a planet is directly proportional to the cube of the distance between the sun and the planet. Okay, ठीक है. Motion of projectiles नहीं, motion of atoms, motion of cars, not like that. ठीक है. Projectile motion, there are 3 things that you have to study. One is called time of flight, ठीक है. So this is given by 2u sin theta by g. Another is maximum height, h max. Okay, so u square sin square theta by 2g, and then you have range.
okay, range. Okay, so this is u sin 2 theta by g. Okay, so like this you have to study projectile motion ray. Okay, we will see this some other day. Next, the path followed by a planet around the sun, it's called as what? It is orbit, and it is what? Elliptical. As per which law? This is as per Kepler's, okay, Kepler's laws of planetary, okay, planetary motion. Circular kaha हिसाब रे थिला Galileo, as per which theory? As per geocentric theory, as per geocentric theory. ठीक है, it is not parabolic, rectangular no है. Parabolic is what? Parabolic is your trajectory, okay, trajectory of projectile motion. Parabolic is the trajectory. Projectile motion में जाए ना, so this is what? Parabolic in nature, okay. Then देखो the value of small g on the planet of on a planet depends on what? Small g depends capital G me by r square. So depends on the radius of the planet, yes true. Mass of the planet, yes true. Shape of the planet नहीं, गोटे universal gravitational constant. यदि constant को बाहर कर ले, g is directly proportional to me by g will be directly proportional to me by r square. So depends on mass also. So it depends on what? What? Both A and B. Okay, ठीक है. So that's it. Okay, so as we discussed all the important around 70-80% of the concepts, ठीक है, and whatever questions also I have discussed, ठीक है, you can easily find 2 questions, 2 to 3 questions from here in exam. ठीक है. Okay, so next class पुणी किसी नुआ टॉपिक आम डिस्कस करिवा with concepts and questions जमी आम क्लास 1 डिस्कस करछंती concepts along with questions. ठीक है. Okay, so you can keep a paper and pen, note down some important things if you want. Now later you can see the recording and note it down. ठीक है. Thank you all of you.